गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। तो आज हम लोग सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स ऑन कल्चरल स्टडीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कल्चरल स्टडीज़, मेक श्योर आप लोग रिचर्ड हॉवर्ड, रेमंड विलियम्स और स्टुअर्ट हॉल का जितना भी वर्क्स है, जितना भी बुक्स है, उसको आप पढ़ना मत भूलो, ठीक है। क्योंकि कल्चरल स्टडीज़ में यही इंपॉर्टेंट है। रिचर्ड हॉवर्ड, आपका रेमंड विलियम्स, स्टुअर्ट हॉल, ये राइटर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कल्चरल स्टडीज़ में। तो हर साल क्वेश्चन इसी में से आता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, कल्चरल स्टडीज में सम ऑफ द बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स में क्रोनोलॉजिकल वे ऑर्डर में यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, विथ द डेट्स। समटाइम्स डेट भी पूछा जा सकता है, सो आप अगर डेट भी आपके पढ़ के जाओगे एग्जाम में तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। सो इन 1936 वेल्टर बेंजामिन रोट द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन. Then in 1949, The Second Sex, it was written by the Simon de Beauvoir. Make sure you remember the name of the book, the writer, and also the date. ठीक है? So in 1952, Frances Fanon wrote Black Skin, White Mask. It was published Black Skin, White Mask. Then now the birth of cultural studies. कब हुआ था ये? In 1957, a book came out, The Use of Literacy by Richard Hogarth. Then we have 1957, we have Mythologies by Roland Barthes. 1958 we have Culture and Society by Raymond Williams. 1957, 1958. In 1961, The Richard of the Earth by Frances Fanon. 1961, again another book by Raymond Williams, The Long Revolution, 1961. Then in 1962 we have Jürgen Habermas's book, The Structural Transformation of the Public Sphere. Then in 1964 we have Understanding Media, Marshall McLuhan, written by Marshall McLuhan. Then we have Marshall McLuhan's another book, 1967, The Medium is the Message. Then Guy Debord wrote 1967 book, The Society of the Spectacle. Then Michael Foucault wrote in 1969 The Archaeology of Knowledge. Then Louis Althusser in 1970 wrote Ideology and Ideological State Apparatuses. Then Stanley Cohen wrote Folk Devils and Moral Panics in 1972. Okay, so the expansion of cultural studies began in 1973. We have The Interpretation of Cultures by Clifford Geertz, 1973. Clifford Geertz got The Interpretation of Cultures. Here we have Stuart Hall's 1973 in Encoding and Decoding in the Television Discourse. Then we have in 1974 again Television Technology and Cultural Form by Raymond Williams. In 1976 we have Raymond Williams Keywords, a Vocabulary of Culture and Society. Then in 1977 we have Marxism and Literature by Raymond Williams. Then in Post-Colonial Subculture we have 1978 very famous book Orientalism by Edward Said. Then Policing the Crisis in 1978 by Stuart Hall. ठीक है. Then Subculture, The Meaning of Style in 1979 by Dick Hebridge. Then The Postmodern Condition by Jean Francois Lauter in 1979. Then Distinction in 1917 by Pierre Bourdieu. ठीक है, Bourdieu. In modern we have in 1981 Simulacra Simulation, Jean Baudrillard. Then Television Culture, John Fiske. Understanding Popular Culture also by John Fiske. The Empire Writes Back, written by Bill Ashcroft, very important. 1980 Contemporary Cultural Theory we have Gender Trouble, Judith Butler wrote in 1990. ठीक है. Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism by Frederick Jameson. Culture and Imperialism 1993, it's also Edward Said. Then we have The Cultural Studies Reader by Simon Jurong. The Location of Culture, Homike Bhabha 1994. An Introduction of Cultural Studies, Graham Turner 1995. On Television by Pierre Bourdieu. Cultural Studies Theory and Practice by Chris Barker. Then we have Representation, Cultural Representation Signifying Practice, Stuart Hall. Then Introducing Cultural Studies we have जियाउद्दीन सरदार. देन 2003 we have Popular Culture and Cultural Studies. ठीक है. तो यहाँ से आपको ना बुक्स ऑफ एडवर्ड सईद, ठीक है, जितने भी बुक्स एडवर्ड सईद का, जूडिथ बटलर एंड ऑल दैट, ठीक है, जीन बॉडिलर्ड का, फिर वो है पायर बोर्डियो, एडवर्ड सईद का, ठीक है. देन अनदर वन वी हैव क्लिफोर्ड ग्रीच. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. माइकल फुको, जितना भी वर्क्स है आप इसको ना क्रोनोलॉजी वे में आप पढ़ो,
ठीक है। देन फर्स्ट में आपको बताया था मैंने ना पहले कि रेमंड विलियम्स, रिचर्ड हॉवर्ड, स्टुअर्ट हॉल का जितना भी वर्क्स है ना क्रोनोलॉजी में आप लोग पढ़ के जाओ। समटाइम्स डेट्स पूछते हैं वो लोग, ठीक है, मेंशन द डेट, और समटाइम्स द बुक्स एंड द राइटर्स मैच द फॉलोइंग, देन ठीक है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स, इसको आप लोग पढ़ के जाओ एग्जाम में, ये मुझे लगता है आप लोग एग्जाम में हेल्प होगा। सो इतना ही है, ठीक है। मैंने यहाँ इम्पोर्टेंट वाला भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। जितना भी होगा ये 1-2 दिन में मैं आपको एग्जाम में जाने से पहले आई विल मेक श्योर वट एवर आई कैन डू, आई विल ट्राई टू हेल्प यू ऑल, ठीक है। सो थैंक यू।